Hello viewers, welcome back to my YouTube channel. My name is Omsuman Sinha and मैं अपने इस वीडियो में वीडियो चैनल पे वीडियो अपलोड करता रहता हूँ फॉर हायर लेवल मैथमेटिक्स, दैट इज़ फॉर BSc लेवल मैथमेटिक्स, क्लास 10 12 हायर सेकेंडरी लेवल मैथमेटिक्स और and I have also uploaded class junior level mathematics also. ओके सो आज हम लोग एक जो टॉपिक हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो टॉपिक नेम इज दिस इज द मेंसुरेशन. एक्चुअली मेंसुरेशन इसको कहते हैं, मेंसुरेशन पार्ट. दिस इज कॉल्ड द टॉपिक इज वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया. तो हम लोग ये वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया करेंगे. तो उससे पहले वॉल्यूम और सरफेस एरिया, व्हाट इज़ वॉल्यूम एंड व्हाट इज़ सरफेस एरिया, ये हमें जानना है. ठीक है, तो शुरू करते हैं. और जैसा कि आप लोग देख रहे हैं मेरे बोर्ड से, मैंने मेरे वीडियो में मैं बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट किया था. हम लोग बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का मीन एंड वेरिएंस फाइंड किए थे. तो वो जो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का जो मीन एंड वेरिएंस है, उस बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन से कुछ मैथ आता है. उसका मैथ हम लोग सॉल्व करेंगे फ्रॉम एन इंग्लिश मीडियम मैथ बुक. वो भी आप वीडियो देखिएगा. लेकिन आज हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो डिस्कशन है वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया. ठीक है, तो शुरू करते हैं. सो व्यूअर्स, टुडे माय टॉपिक नेम इज वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया. पहले हम लोग सरफेस एरिया लिखते हैं. सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम. तो पहले हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट सरफेस एरिया के बारे में. ठीक है, उसके बाद हम लोग जाएंगे वॉल्यूम पे. फर्स्ट इस सबको जानने के लिए फर्स्ट हम लोग को जानना है सॉलिड. सॉलिड, व्हाट इज सॉलिड? सॉलिड क्या होता है? जो कुछ स्पेस ऑक्यूपाई करता है, मतलब कुछ स्पेस लेता है. स्पेस मतलब जगह लेता है. ठीक है, दैट इज कॉल्ड सॉलिड. जैसे ये पेन हो गया, दिस इज ए सॉलिड. ये कुछ जगह यहाँ पर ले रहा है. ठीक है, सिमिलरली ये बोर्ड, दिस ऑक्यूपाइज सम स्पेस. ये कुछ जगह ले रहा है यहाँ पर. ठीक है, तो ये एक सॉलिड हो गया. या हम लोग ले रहे हैं एक मैच बॉक्स. ओके, मैच बॉक्स, दैट इज ऑल्सो ए सॉलिड. और हम लोग अगर लेंगे एक डाइस, सॉरी वन डाई. ठीक है, एक डाई अगर हम लेंगे, दैट इज ऑल्सो ए सॉलिड. अंडरस्टूड? या मैच बॉक्स हो गया. या हम लोग एक कवर्ड बर्थडे कैप, मतलब बर्थडे कैप जैसा होता है. बर्थडे कैप कैसे देखने में होता है? ऐसा देखने में होता है. ठीक है, तो ऑल कवर्ड मतलब नीचे तरफ भी कवर्ड बर्थडे कैप ऐसा. ठीक है, वो भी एक सॉलिड ही हो गया. ठीक है, और सो दिस आर द कॉल्ड द सॉलिड. सब हम लोग सपोज द एग्जाम्पल्स आर, अगर हम लोग एग्जाम्पल लिए तो एग्जाम्पल जैसे हो गया क्यूब हो गया, क्यूब, सिलेंडर क्यूबॉइड हो गया, क्यूब क्यूबॉइड. ओके, सिलेंडर is also a solid. Cone, a sphere. So these are the examples of solids. Understood? Next,
So these are the solid. Next come to volume of a solid. Volume of a solid. What is volume? A space occupied by solid body is called volume. Space occupied by solid body मतलब यहाँ पर तो ये तो सॉलिड हो गया, ठीक है, द बॉडी इज ऑक्यूपाइंग द स्पेस, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, ये क्या होगा मेरा, द व्हाट इज वॉल्यूम, द स्पेस ऑक्यूपाइड बाय द सॉलिड बॉडी. तो दिस इज स्पेस occupied by solid bodies. Space occupied by solid bodies. तो ये हो गया वॉल्यूम, ठीक है. जैसे मैं आपको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल करके दिखाता हूँ कि अगर हम ये जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, इफ़ वी टेक दिस पेन, अगर हम लोग ये पेन ले लिए, ठीक है, तो इसका वॉल्यूम क्या है, इसका वॉल्यूम है मतलब इसका वॉल्यूम मतलब इसमें टोटल कितना चीज़ है, दैट इज कॉल्ड द वॉल्यूम, ठीक है. मतलब द स्पेस ऑक्यूपाइड बाय द सॉलिड बॉडी इज कॉल्ड द वॉल्यूम. मतलब ये मतलब अगर हम लोग यहाँ पर देखेंगे टोटल इसका अंदर का चीज़ सब कुछ लेके, अगर हम लोग इफ़ वी कंसीडर दिस, इफ़ वी टेक हियर एंड इफ़ वी कंसीडर ऑल द इनर थिंग्स ऑफ दैट दे आर occupied in this pen, that is called the volume. Understood? Similarly, this is the shape of cylinder. This is the shape of cylinder. Similarly, if we take one matchbox, the matchbox is also like with there. If we take one cube, that is if we take suppose one die, that is also the same thing, that is also that have also a volume. Understood? Now we will discuss later about their volume. First we have discussed what is volume. So we have already discussed that it is volume. Next come to cuboid. Cuboid. A solid bounded by 6 rectangular face. A solid bounded by 6 rectangular. This you have already know cuboid, what is cuboid, but for doing the maths I am just telling you these definitions. Okay, and what is the shape of a cuboid? You know already. This is the shape of cuboid. Okay, this is the shape of a cuboid. These are all bounded by 6 rectangular face. That is, these are the face. This is the first face. Okay, the opposite is the opposite face. This is the second face. Okay, this is the first face. This is the top face. You can say top face. This is the side face. This is the side face. Okay, next this is the opposite side face. These are the another opposite side face. Understood? So these are called the face of this cuboid. Actually all the related things are given in the book, and obviously I am following my favorite R.S. Agarwal. R.S. Agarwal math book. As you know that a cuboid has 8 vertices, 1 2 3 4 5 6 7 8 vertices. So it has 8 vertices, 6 faces,
6 face, okay, and how many number of edge? 12 edges, 12 edge. It has 8 vertices, 6 faces and 12 edges. Understood? Similarly, cube. Cube also you know about a cube. Solid bounded by 6 square face. Solid bounded by 6 square face. That is called a cube. Understood? Hope it is visible to you. So, similarly, if we can take the figure, I will taking a bigger figure, so you can understand it. This is a cube. If we named it A, B, C, D, E, F, G, H, if we named it, so this A, B, C, D, E, F, G, H are all these A, B, C, D, E, F, G, H are all called vertices. A, B, C, D, E, F, G, H. Similarly, if we put the name over here, that will also happen. Understood? These are the vertices. These are the faces. These are the first face. This is the top. This is side face. This is also side. This is the front face. First face. No, this is the front face. Front. This is the front face. This is front face. This is top face. This is side face. This is also side face. This is back face. This is bottom face. Okay, bottom face. So that's the cube. Next, volume. Come to volume and surface area of a cuboid. Volume and surface area of cuboid. First come to, okay, so this is the cuboid. Understood? Now all cuboid must have length. A cuboid contain with length, that is L, breadth, that is B, height, that is H. Okay. One cuboid is contained with length, breadth and height. Understood? What is length? This is the length. This is the length L. Breadth, this is the breadth B. This is the height small h. Understood? So if it is possible, then the volume should be what? Volume should be L into B into H. Okay. Now here length, breadth, height, all unit are the measure of length, that is L. Mean if we take L as centimeter, so breadth also centimeter, height is also in centimeter. Okay. So these are the unit of length. Now here we can say that we are multiplying L centimeter into B centimeter into H centimeter. That's equals to L into B into H centimeter into centimeter into centimeter. That's equal to LBH centimeter cube. So this is the unit of volume. That is, unit of volume
is equal to unit cube or cubic unit, whatever you say, unit cube or cubic unit. That is the unit of volume of any figure, of any type of figure, that is any type of solid figure. We are discussing here only cube and cuboid, but it should be for the whole volume. So that is the unit of volume. And diagonal, you know already about the diagonal of a cuboid. Diagonal of a cuboid. What is the diagonal? Diagonal means for a two-dimensional figure, since cube is a three-dimensional figure, for a two-dimensional figure the diagonal means the straight line which goes from one corner, one vertices to another vertices. Now if we consider this figure, diagonal means the straight line goes through one vertex to the opposite vertex. Here also that can be done. The opposite vertex of it is what? This. Obviously, this is a three-dimensional figure. So the opposite vertex of it is this vertex. So if we draw a straight line, that is a virtual straight line, a fictional straight line. If we just imagine that there be a straight line over there, so that is the diagonal. Similarly, from this vertex to this vertex, it is also the diagonal. Understood? From this vertex to this vertex, that is also a diagonal. Understood? Next, last one, this vertex and this vertex. You just look at from my pen tip. This is also a diagonal. Okay. So we are getting four diagonals in a cuboid, or in a cuboid we are getting four diagonals. So diagonals of a cuboid. First is volume of a cuboid. Volume of cuboid. Volume of cuboid. Next, diagonal of a cuboid. What is the diagonal? Root over of L square plus B square plus H square. Now, since diagonal is a length, so its unit should be only unit, not unit square or unit cube. Understood? If we take LBH as centimeter, if we take here as centimeter, then it should be centimeter. Understood? Similarly, we are considering cuboid. So